म्हापसा एकतानगर परिसरात दोन मुलांमध्ये झालेल्या किरकोळ भांडणानंतर दोन्ही कुटुंबातील महिलांमध्ये तीव्र शाब्दिक वाद झाला। हा वाद आणखी चिघळत दोन्ही कुटुंबातील पुरुषांमध्ये हाणामारी झाली। यात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तींना प्रथम म्हापसा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। त्यानंतर पुढील उपचारासाठी जीएमसी मध्ये हलविण्यात आलं। म्हापसा पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या तक्रारी नोंदवून पुढील तपास सुरू केलाय। माझा धारा घेऊन मारणार आहे, माझा धारा घेऊन मारणार आहे. यांच्यात पाया पडल्यात आणि कुणी त्याचा डोकं सुद्धा मोजत नाही. माझ्या चेहऱ्या खूप मारला, माझ्या घरा घेऊन माझ्या खूप मारला, माझ्या चेहऱ्या घेऊन माझ्या घरात खाऊन घेऊन वडे झालेले मुलगी ते हे जावं बाबा पाया पडल्यात आणि उचलला मुलीने तर डोकं सांगले का सांगले का हे सगळे न्यूजवर येऊन जायचं, टीव्हीवर येऊन जाय. ते सतत झगडते हे लावून देतात आणि भागी बसतात आणि मी ती त्यांना मोठ्या माणसाला सांगायला गेले ना ते आम्हाला ऐकत नाही. असू दे, आम्ही पहिलीपासून भांडलो नाही, असू दे असं म्हणतात. हे म्हणून सकाळी हिला सांगितलं मी तुला मारले, तू कंप्लेंट कर. हे त्याच्या बाबाने आईने पाया पडली, आई येऊन तिला हात फिरवली म्हणून तिनं कंप्लेंट केली नाही. हे चूक आमची. दुपारीच कंप्लेंट केली असतं तर हे मध्ये पडल्या तिथे बघून नस दाबली पुरीचं माझ्या ह्या मोठ्या मुलीची. आणि तर आता त्यांच्यानी हे बाहेर आला एकदम बुरशा गाड्या घालायला लागला, घाणीट्या गाड्या. कोण कोण? राजा, ज्या मनुष्याने तुझ्या चेड्याचं असोल्ड केलं. हा. आणि तो गाळी घालता म्हणून तू माझ्या आवय गाळी घालता का म्हणून तो आमची हे हातात हे करू लागलो. आवय बुरशी गाळी घालताना कोण उभी राहता? हे बायलेक लायतात ह्या बायलेक आणि हे फाटी राहतात आणि माय माव येऊन माझ्याकडे सप्लाय करतात. असू आम्ही पहिलीचे लोक, असू भुरग्या आम्ही झोडून ना अशी करून माझ्या चेड्याक आता इना कारण मारला, येऊन दांड्याने मारला. माझ्या गॅलरीत चौकशी करपाची, रक्ताचं भोंबाळ कसं झालंय त्यांनी बघायचं माझ्या घरात. माझ्या चेड्याक इन्ना कारण मारला येऊन ह्यांच्यानी. ह्यांच्या चेड्याक जर लागला चोडवा मारहाण करायला नेमकं कारण काय? काहीतरी कारण असेल. गाळी घालायला लागला. 4 वर्षांमधून ती बाई 4 बारा आमच्याकडे झगडली. मी ते मोठे माणसून त्यांना सांगते मी की बाई तू त्यांना समजावं, आम्हाला सण होत नाही. बुरशा गाळ्या घालते ही जी बसली बाई, ती बुरशा गाळ्या घालते आणि ऐकायचं नाही तसल्या गाळ्या घालते. तर ते गाळ्या घातल्यानंतर कोण गप राहणार आहे? माझी वय काय, तिचं वय काय, कसल्या गाळ्या घालते मला ती. आणि सासू म्हणते पाया पडते, सासरा पाया पडते, जाऊ दे जाऊ दे म्हणून. पोराला ती मारली माझ्या नातवाला. तरी मी माझ्या मुलाला सांगितलं नाही आम्हाला शेजारी पाहिजेत, आम्हाला झगडी नको म्हणून. माझा मुलगा मला तू कशी गप बसलीच आई, मारलं तरी. मला एक गोष्ट का नाही सांगितलं? बुरगी खेळडा म्हणून एक जाता म्हणून अवघी राहिली. 3-4 वर्षाच्या चेड्या खातीर ह्या लोकांनी माझ्या चेड्या घेऊन मारला. आमगेरूच नाचतात, आमगेरूच खेळतात, आमगेरूच सगळे करतात
आणि म्हटले तिका 3 दिवसापासून झगडतात ती आमगेर तू धाडू नका झगडीच जाय ना तुझ्या चेड्याक तू सांभाळून दो बुरशे गाळी घालूंक लागली आयपाक जायना तसले गाळी घालता ती तुझ्या फुड्यानं तुझ्या माझ्या चेड्याक मारलो माझ्या फुड्यान मारलो मागा ती माझे 2 नातराक सांभाळू आणि कोण नसली ही भुरगी माझी सगळी खंय असली आम्ही तिघाच असली म्हाका कोणाक फोन लावंक येईना माझ्याकडे फोन असं म्हणजे खंय पडला ते म्हाका खबर ना येना कारण लुंगी घालून असलो लुंगी उकलून येऊन मारून वयर रस्त्यावर हसतालो तो किरे घेऊन मारले त्याचे दांडो मारला आता दांडो ह्यांच्यानी लपयला झाल्या ते आता कुणी जाऊन चौकशी करायचं दांडा सगळ्या रक्तानं भरलाय तकलेर मारले तकलेर मारीत रावलो आडवो पाडून मारीत रावलो मग त्या भुरग्यांक सांभाळू हे एकटं झालो आणि हे सगळी येयली आवय बापूय सगळी येयली पण त्या दोघांनी जाम मारल्या माझ्या भुरग्याक माझ्या चेड्याक तुम्ही रेडे कसे तुम्हाला एकट्या चेड्याक मारतात तुम्ही तिघाच असा आम्ही तिघा आणि लहान भुरगी माझी नाचरा तुमची कोण आणली अडवपा कोणच नसली कोण नसले म्हणून मारली कोणच नसता आम्ही 4 जण असता माझ्या नातवाक 8 दिवसा पहिली मारली आज झगडी नका म्हणून उगी रावले सासूमाईक सांगले तिच्या जावेक सांगले ते उगी रावले आमका ऐकना असे तसे म्हणून हे तिका लावून देतात आणि फाटी रावतात तिका झगडून लायतात ते फाटी रावतात हिना कारण मारला माझ्या चेड्याची काहीच चूक नसली कितल्यांक सुमार झाले काय नाही 10:30 10:30 असेच असतील आता किती कंप्लेंट केला तुम्ही हय कंप्लेंट करतली हा केस मागे घेऊची ना माझ्या चेड्याक इना कारण मारला माझ्या चेड्याक भरपूर लागला त्याका न्याय मिळून जाय फक्त आयज हे झाल्या त्या भुरग्यांक खातीर लहान तिचं चेडो आमगेरूच असता आणि किती म्हटले आमगेर धाडू नका तुझ्याच घरात दोर भुरग्या खातीर तू झगडटा मुगो तुका अक्कल ना तू तुझ्या भुरग्यांक दोन माझ्या नातराकडे तू धाडू नका भुरग्या खातीर झगडी केली ह्या बाईने भुरग्या खातीर धाकट्या कितल्या जणांनी मारलं मिळून या दोघांनी मारलो आणि कोण आणले आणि कोणी येऊन हात लावून ना आवय बापू येलो पण त्यांनी मारून ना दोन्ही भावान मारल्या दांड्यान असं तसं मारून ना मरसर मारला त्याला एकटं पडलो मग तुम्ही दांडे माझ्या घरातले दांडे घेऊन माझ्या गॅलरीतून मारतात हे कसलं कारण त्यांचे किती केले आम्ही त्यांचे खाल्ले किती आमका वाढ लागते ह्यांची सगळी हिस्टोरी सांगायची कंप्लेंट बरोवन घेतलं तुम्ही कंप्लेंट करून घेतल्या माका माझ्या चेड्याक न्याय मिळूंक जाय हेंका भितर दवरूंक जाय ना जाल्यार हांव कोर्टान केस लढतलें तेंच्यांनी दुसऱ्या पार्टीनूय तुमचेर क्रॉस कंप्लेंट घातला खबर ना म्हाका अजून आमकां अजून सांगूंक ना हांव कोर्टान केस लढतली हेंका कशी सोडटली हेंका भितर दवरूंकूच जाय म्हाका सांगून येयला पुलिसाक फोन कर अशें चुटकी मारून दाखयला पुलीस आपले म्हटला इतल्या पोस्टर बोलून येयला म्हाका बुरशी उलयतात पोलीस माझ्यातले जाणटी तुम्ही भुरगे बुरशी अशें उलय. म्हटलें न्ही न्ही. हय पोलीस माझ्या बॉल सापले मी तिका सांगला त्याने असे जाय पुलिस किरे बॉल सापले त्याच्या आपण तुम्ही जाय ते वचा पोलिसाकडे म्हटला वयसून हे पावर दोन पारा हाडटा. उलयला त्याने पावर आठटा मुलाला वयसून वयसून पावर हाडटा. हेच त्याचे उत्तर असा खंयच्या वयरसून आता ते आमकां खबर ना वयर सकल आमकां आणि ते काय पोलीस खबर ना असे हे जाल्यार आम्ही काहीच खबर ना आमकां लो हेल्प करतली आमकां खबर माझ्या चेड्याक मला म्हाका न्याय मिळूंक जाय माझ्या चेड्याक न्याय मिळूंक जाय माझ्या चेड्याक विनाकारण मला म्हाका गाळी बुरशे घातला आणि काय करत नसताना तुमची भुरगी माझ्या घरान येऊन खेळतात तुझ्या भुरग्याक हात लायले की ही बायल मारला लहानाची वड ही भुरगी सुद्धा भितर पडल्या ती माझ्या घरान ओढली झाल्या हे माझ्या घरान ओढली झाल्या माझ्या घरान किती शिस्त ती पहिली त्यांका भिताली करून माझी भुरगी समजताली पण माझ्या भुरग्याचेर हेच्याने उलटून पडले आता विनाकारण उलटून पडल्या त्यांका न्याय मिळूंक जाय आणि त्यांका सोडले जाल्यार हांव कशें उगी रावचे ना त्यांका भितर सोडूंक जाय तेणे 8 दिवस घर में हम लोग घर पे सब नाश्ता वाश्ता करके घर पे बैठे थे घर में बैठने के बाद वो कुछ बैंक का कुछ बुक लेकर घर पे आई मैं मेरे घर पे आके इसको दिखा रही थी जरा थोड़ा देख बोल देखी तो चले जाना चाहिए ना चुप जाना चाहिए ना अपने घर पे वो बोलने लगी तो मेरे को बात मेरा लड़का छोटा है हाँ? उसको कुछ समझता नहीं है उसको लड़के को बोल रही है कि तू मेरे से बात मत कर तो ऐसा है तेरे को मारती हूँ तो तेरी मम्मी मेरे को बोलती है हम लोग के बच्चों को मारे तो चले ऐसा बोलने से मैं कहती देख अक्का हम लोग उसको अक्का बोलते हैं मैं बोली अक्का जब तेरा लड़का मेरे बच्चे को मारता है तो मेरा लड़का भी मारता होगा क्यों बोलती है तू ही बोलती है कि बच्चों के मैटर में मत बोल
तू बोली तो मैं भी बोलना ही पड़ रहा तेरे को। जाने दे बोल के वो गई, इसको बाहर लेके चल, बहुत बोल रही हो, हम लोग बाहर गएंगे, चल बोल के इसको बाहर लेकर गए। मैं भी जाने दे बोल के चुप बैठी, कुछ बोले ही नहीं हम। बाद में फिर वो नीचे वो अज्जी रहती है, वो आई ऊपर, तो ये रो रही थी, तो बोली कि बच्चों को क्यों मार रहे हैं, बच्चे बहुत सताते हैं। वो काकी माँ हम लोग ऐसे ही है। वो हम लोग को बोली कि तुम लोग भी बचपन में बहुत सताते थे तुम्हारे मम्मी को, तो तुम्हें भी मारते होंगे, हम लोग भी क्या करें, ताकि वो भी हम लोग भी मारते हैं, बहुत सताते, एक है बहुत, ऐसा कॉमेडी उड़ा रहे थे हम लोग, मजाक करके बोल रहे थे। वो आई एकदम से उठ के आई, क्या बोलना उसके बच्चों को मारती है तो बोलती है क्या बोलना उसको, ऐसा तो देख अक्का मैं तेरे सामने बोल रही हूँ कुछ, तो आके मत बड़बड़ मत कर। एकदम से उठी तो घड़ करने लगी, बहुत बड़बड़ने लगी। बड़बड़ने से मैं क्या बोलती, देख तेरे बच्चों को मारते तो तेरे को गुस्सा आता है, तू मेरे को बोलती जीना करके नहीं खाएगी, तू जाएगी तेरे पति को लेके भाग जाएगी, ऐसा बोलने से मैं क्या बोली, देख मैं जीना करके खा रही हूँ बोलती इधर ही है, मैं गई नहीं कहीं भी, तेरी बहू की जैसा नहीं है, मैं कहीं भी भाग के गई बोलती। वो बोलती है मेरी बहू जब भाग के गई है जड़े के साथ, तू भी चले जाए जड़े के साथ, ये गलत होता है इसका बोलना। जब वो मेरे को बोली तो मैं भी बोली चल मैं जा रही हूँ जड़े के साथ, तू भी चल रही। तो झगड़ा बच्चों की वजह से चालू हुआ था? बच्चों की वजह से ही चालू हुआ था। किसने, बड़े ने बच्चों को मारा था? बच्चों को एक दूसरे को मारते हैं, बच्चे मार रहे थे? हाँ, बड़ों ने बच्चों को मारा था? नहीं कोई नहीं मार। अच्छा, अभी शाम को क्या हुआ? शाम को ये बच्चों का झगड़ा सुबह था ना? से ही बोल रही हूँ जो हो रहा है। हाँ। तो मैं बोल रही थी तो तू भी चल मेरे साथ बोली, तू इतनी बात की, इतना लंबा की, तो वो जो उसकी बेटी है बड़ी वाली आके मेरे को बोली कि तू मेरे माँ को ऐसा क्यों बोली। जब मैं बोली तेरी मम्मी जब मेरे को बोल रही तो मैं भी तेरे को उसको बोलूँगी ना, ये बात इतनी बड़ी बात जब मेरे को बोल रही तो मैं भी उसको बोली। तो आके एकदम चप्पल काट के सर पे मारी, तो मैं भी उसका सब बाल घसीटी, इधर में कुछ भी हाथ नहीं लगा। भंगड़ी टूटी तो मेरे को लगा, इधर भी लगा। भंगड़ी जब टूटी थी उसको भी लगा होगा, जब भंगड़ी जानबूझ के कोई तोड़ के चुभाता नहीं है, झगड़े में चुप गया होगा, मेरे को भी लगा। अब मैं जाके पुलिस को ये नहीं दिखाऊंगी मैं उसको मेरी भंगड़ी चुभा रही बोल के मैं बोलूँगी नहीं, तो जो हकीकत है वही बोल रही हूँ। ये इतना हुआ तो सब लोग आए, हम लोग को धक्का दिए, चलो जाने दे बोल के चुप रहे। जब उसका बेटा भी आया तो मेरी माँ को ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है, बोलने लगा, देख तू तेरे आंखों से कभी देखा है तेरे घर पे बच्चों के घुस के अंदर घुस के मारे, तू देखा है कभी? कुछ नहीं बोल, चुप ऐसा खड़ा है। मैं जब बोली क्यों हम लोग मारे नहीं, तू बोलेगा चुप खड़े रहेगा ना। तब फिर और उसकी जो मेरे को चप्पल ले मारी थी उसकी लड़की आई आगे, भारा तो बोलने लगी। मैं बाहर नहीं आई, जब उतना बोल के अंदर गई ना, हम लोग बाहर आए नहीं हम लोग 10 बजे तक हम लोग अंदर ही, खाना पीना सब हम लोग का काम चल रहा है। जब से हुआ है ना तब से लेके 10 बजे तक इतना बोल रही तू हिजड़ी है, तू लावारिस है, कुछ बाहर कुछ कचरा वगैरह कुछ सटने के लिए जाऊंगी ना तो बड़बड़ने लगेगी, लावारिस है, ऐसा है वैसा है, हिजड़ी है, तू इतनी लोगों के साथ भाग कर गई है। मेरे सास और मेरे पति उधर ही बैठे थे, कुछ नहीं बोले, सुन रहे। रात को नहीं, दोपहर में ही बैठे थे वो लोग। अभी रात को क्या हुआ? वही बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ मैं। तो जब वो बैठे थे ना तो कुछ नहीं बोले, जाने मैं बोल रही मम्मी चलो अंदर चलो, आपको देख के और ज़्यादा बोलेगी, चलो अंदर चलो। बोले मेरा घर में इधर ही बैठेंगे हम लोग, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोले। 10 हो गया टाइम, जब 6 बजे मेरे ससुर काम से नीचे उतर रहता है तो बंगड़ी काट के जो में डाली, ये ले तेरे बेटे को पीना, तेरा बेटा कुछ नहीं बोल रहा है, जड़ा है, तो साड़ी पीना, और चूड़ी निकाल के मेरे गैलरी में फेंकी, चूड़ी निकाल के। और उसको हो गया, वो सब होने के बाद जाने दे बोल के मेरे ससुर नीचे उतर के आए, मेरे को ही डांटे। ये कौन फेंका? ये जो उसकी लड़की है, लड़की और माँ मिल के ही फेंके होंगे, हम लोग अंदर थे। अच्छा। जाके ये चूड़ी जाके झाड़ू मार के पूरा निकाल के फेंक दी। 10 बजे हम लोग खाने के लिए बैठे थे ना, 10 बजे के बाद क्या हुआ, मैं रोई, मेरे लड़के को धक्का में मेरा लड़का गिर गया तो फ्रैक्चर हुआ उसका पाँव। आज ने दिखा के वही लेके आया, वो मेरे गोद में डाल के मैं उसको रोते बैठी। तो मेरे वो लड़का कितने साल का है? 4 साल का, 4 उसको चालू फ्रैक्चर हुआ उसका पाँव।
तो चार मैं क्या की लेके उसको रोले तब बेटी तो मेरे पति को मेरा बोला इतना बोल रही है यार, इतना बोल रही है, बहुत बोल रही है बोल के वो मेरे ससुर के जेब में चूड़ी डाली में जड़ा बोल रही है, ऐसा कितना बर्दाश्त करूँगी। बहुत गली मारी हम लोग को बोलने के लिए नहीं हो रहा है, बहुत गली मारी। बाद में मेरे पति गए बाहर, पूछा आपका क्या बोली वो बोल, जब वो बोल रही थी क्या बोली वो बोली, तो बोलती है कि तेरी जो वाइफ बोलती है कि मेरे को जड़े के साथ जा, तू जड़े के साथ जा, ऐसा बोली। जड़े के साथ जा बोली, वो स्टार्टिंग की तुमने बोला पहला कि मैं बोली कि तेरे बहू के सड़का में गई नहीं, तू बोला तेरे बहू जब गई है जड़े के तो तू भी जाए जड़े के साथ। तो मैं बोलने की वजह से वो बोली होगी, तू बोली तब वो भी बोला ना, तो ये जो उसका लड़का पी के आया खूब मार इतना वाज लेके फेंक रहा है, 2-3 लेके वाज फेंका हो। ये कभी अभी अभी 10 शाम को? बजे की बात है, रात की 10 अच्छा। बजे। हाँ, अब वो वाज लेके फेंकने के बाद इसको लड़की उधर ही खड़ी थी, बच्चे लोग इधर, ये लड़की उधर, उसको आके एकदम मेरे पति को ऐसा मारा ना हो, उसके बाजू खड़ी थी, इधर लगा उसको। लड़की ने मारा अच्छा। पति को? उसका जो लड़का है ना, हाँ। वाज लेके ऐसा फेंक दिया। हाँ। वो मेरे पति को लगा, इसको इधर भी लगा, वो जो टूटा ना तो उसको इधर लगा, लड़की को लगा बाद में? उसको लगा। ओके। तो उसको गुस्सा आ गया, किसको, मेरे पति को, कि लड़की को लग गया है, लड़की को मार रहे हाँ, हैं। तुम्हारी लड़की को लगा? बाद में फिर क्या कि इसके पापा को फोन हुआ, उसके पापा आए, हम लोग बच्चों को अभी तक नहीं मरे, तुम लोग का समझ एकदम, पापा उसके गुस्से में होके वो भी मारे ये भी मारे, ऐसा होगा। हम लोग सटाप एकदम छुड़ा देते हैं तो उसको कैसे लगा बाद में? इसको। वही बोल रहे हो ना, झगड़ा एकदम आदमी लोग मार लेते तो लगा होगा। उसके घर पे जाके उसने मारा भी था? मारा, मेरे पति ने उसको, मेरे देवर को इधर लगाया है, मेरे पति को इधर लगाया है, और का आवाज फूटा तो उसको इधर, मेरे को इधर, इतना बड़ा लेके फेंक दिया आवाज। अच्छा। हम लोग अकेले नहीं मारी, स्टार्टिंग वही की है पहले। अभी जो उसको झगड़ा जो हुआ था वो घर के बाहर हुआ था कि उसके घर के अंदर? अंदर ही थे, हम ऐसा लॉक लगा के, मैं चाबी लगा के खड़ी थी, कोई बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। तो आवाज किधर से आया? तो जब वो मतलब फेंका था तुम ना, घर में तो नहीं बाद रहे? में अभी उसके घर पे जाके मारा कि क्या? नहीं सुनो, जब वाज फेंका ना वो, हाँ। उसको लगा ना एकदम प्रेशर में आके, इसके पापा मेरे पति क्या किए, एकदम गेट खोल के, मैं गेट को लॉक लगाई थी, एकदम जाके उसको पकड़े। आदमी लोग जब झगड़ा करता है तो एक दूसरे को लगता है, तब वो अपने घर के बाहर था? उसको ऐसा मारा, वो उसको ऐसा मारा, तो उसको इधर लगा, मेरे पति को इधर लगा, उसको इधर लगा, उसको ज्यादा वो पिया ना तो एकदम धाड़ से गिर गया, तो सर को उसको जमीन का लग गया। झगड़ा जब हो रहा था वो अपने घर के बाहर था? हाँ, घर के उसका हम लोग बीच में ऐसा रास्ते पे हम लोग, हाँ। अंदर ऐसा मारा, अंगन में था। अच्छा, तो अपने घर में नहीं था वो? जब उसको नहीं, अपने घर में नहीं था तभी? घर पे नहीं, अपने उसके घर पे, खुद के घर पे था वो? इसके पापा एकदम गए ना, जाके घसीट के आ, तुम मेरे बेटी को कैसा मारा, अच्छा। तो वो भी उसको मारा, वो भी उसको मारा। अब जो अंदर था तो उसको बुलाएंगे ना, एकदम पिया है वो, उसके आप अंदर- जैसा एकदम नहीं पिया वाला इंसान है ना, एकदम खड़ा होके मारेगा। उसके अच्छा। घर पर जाकर वहाँ लेकर आए? कौन? नहीं, घर पे नहीं, अब वो कुछ ढूंढ रहा था मारने के लिए। ओके। उसने मारा। हाँ, एकदम ढूंढ रहा था कुछ मारने के लिए, जैसा वाज लेके मार रहा था, ऐसा कुछ ढूंढ रहा था मारने के लिए। तो ये जाके एकदम इसके पापा आए, एकदम इसको पकड़े तो उसको मारे, वो उसको मारे, उसको इधर लगा, उसको इधर लगा। वही वो पिया है ना, तो आपके जैसा अगर नहीं पिया होता तो ऐसे खड़े की बात करते, वो पिया है तो उसको एक ही मारेंगे तो धड़ाम से गिर जाएगा ना, तो लगेगा ना सर पे। अभी झगड़ा हुआ वो क्या हाथ से हुआ या और कुछ यूज किया था, डंडा वगैरह यूज? कुछ भी नहीं, वो हाथ से ऐसे लगाया, हाथ से मारा। हाथ से मारा था? मैं कितने जो लोग- देखी हूँ वही बोली हूँ, और कुछ नहीं। कितने लोग थे मारने के लिए उसको? कोई नहीं, यही है, मेरे पति थे और मेरे देवर थे, हम लोग पर- जाके हाँ। उनको तीनों लोग को छुड़ा रहे। आपके पति और देवर मतलब भाई थे वो? उसकी मम्मी उसको बेटे को लगा बोल के बाल खुले रख के डंडा लेके ऐसा ठहरिया मेरे पति को मारने, अच्छा। और उसकी बेटी चूड़ी निकाल के मेरे पति पे फेंक रही है, मेरे पे फेंक रही है। मेरे पति को बोलती है ले तू पेन, ऐसा आई मेरे को मारने के लिए, सब लोग छुड़ाए और मेरे को मारने के लिए आई थी। नींबू फेंके बोले, हम लोग नींबू नहीं फेंके हैं, और हमारे जात पे भी गई हो, मुस्लिम लोग ऐसे ही करते हो। शेजारी आसल्यानं दमकारा माझ्या बहिणीक मारलो तेंच्यानी. ओके. तिका म्हाजो धाकटो भुरगो आसलो, तो घरा वयतालो तेंगे खेळपाक न्हू, शेजारी म्हणजे घराच्या घर ते पण. तेणें म्हाज्या भुरग्याक थापड मारलेलो, पण म्हाज्या आवयन म्हाका कांय सांगूंक नासलें मारले बिरले म्हणून. तो दीस गेलो आनी आई घरा कडेन झगडी आनी म्हाका फोन मारून आपयलो. मागीर म्हाज्या भयणीकूय मारलो केस बीस घालून. हांवें म्हणलें चल गो हॉस्पिटलान कंप्लेंट बी कर. तेंच्यांनी कांयच करूंक ना.
मागीर हांव साने घरा गेलो आनी हांव बोल्लो हेंची बाडा चालूच आसली. हांवें म्हणलें कित्याक बाडा करता, कितें जालां काय म्हणलें. हांव एकटोच घरान चेडो. बाडा कित्याक करता हे तें म्हणलें. ती म्हाका बुरशे गाळी म्हणून म्हणलें म्हाज्या आवयक बी म्हणजे एकदम बुरशे म्हणजे हांव उलोवंक शकना ते गाळी. एकदम बुरश्यो गाळ्यो घालूंक लागले. आनी तो येयलो एकटेचो घोव. तो मालो चड उलयता म्हणजे गाळ्यो घालून चड उलयता हे तें करता म्हणून. हांवें म्हणलें पळय म्हणलें तुज्या वांगडा म्हाजें कांय ना म्हणलें. तुज्या बायलेन म्हाका अशें सांगलां म्हणलें. म्हाजी बाय हें जालें रे. हांवें म्हणलें चल आसूं पाड म्हणलें चल भुरग्यांची. हांवूय मातसो बडबडलो कित्याक म्हाकाय तिडक येयल्ली. हांवूय बडबडलो हांवें गाळ्यो सोगल्यो. मागीर तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना. हांव बसलो आमच्या गॅलरीन कंपाउंड सोडून आमची गॅलरी पयस गॅलरीन बसलो. येयले 10-12 जावन येयले तेच म्हाका मारूंक स्टार्ट केलें घरान भितर. गॅलरीन येयले तेच म्हाका मारूंक स्टार्ट केलें. म्हणजे म्हाका हेंच ना उलोवपाक चान्सूच ना की हांवें म्हणलें कितें करता काय म्हणून. आनी तेंच्यांनी म्हाका मारपाक स्टार्ट केलो. म्हाका कितें मारलें तें हांवें कांय हथियारां बिथियारां पळोवंक ना. तकले बी फुटली हें जालें. आनी मागीर हांवें भाचेर फोन केलो. ती येयली. ती म्हणली पयलीं आमी हॉस्पिटलान या. आमल्या पयलीं पुलीस स्टेशनान या म्हणलें. आमी पुलीस स्टेशनान गेले. थंयसून म्हाका हांगा हाडलो. कितले जाण आहले मारपाक तुका? मारपाक हांवें 2 जाणांचें तोंड सारकें पळयलां पण बाकीच्यांचें पळोवंक ना. कित्याक ते कोण? 2 जाण ते आमचे शेजारी घराक तेकून घर. भुरग्या खातीर म्हाज्या भावाक घेवन तेच्या घरातल्या 2 दादल्यांनी दुसऱ्या लोकांक कोणा भुरग्यांक घेवन येवन म्हाज्या भावाक मारला दांडो घेवन. म्हाज्या घराच्या गॅलरीन सगळे रस्तो पडला. सगळे पळोवन येयला आनी म्हाज्या भावाक घेवन हांव पुलीस स्टेशनान गेलें. पुलीस स्टेशनासून ताका हांगासर हाडला तेंच्यानी. हे सगळे पळयलें की म्हाजी आवय पुलीस स्टेशनाचेर ते भायर बसले. मारपाचें कारण कितें? भुरग्या खातीर दुसरें कांयच ना. ल्हान भुरग्या खातीर झगडी. म्हणजे कितें भुरग्यां खातीर? भुरग्याक ती कितें म्हणटा जिची भुरगो आसा पळय ल्हान ती कितें म्हणटा तुमी म्हाज्या भुरग्याक अशें बी हात लावपाचें ना. भुरगीं ती आमी त्या येदेशा भुरग्यांक मारतली ताका आमी जीव की प्राण करता. इतलो आमी ताका घरांतलो कसो आमचो भावाचो भुरगो तसो करता ताका. आनी ती बायल आसा पळय ते म्हाज्या भावाच्या भुरग्याकूय तेणी थापण मारली. आमी तेन्नाय काय म्हणून त्या भुरग्या भितर आमी पळपाक जायना व्हडल्यान आमी उक्ती रावली. आतां तेणी हें केलं की आमी कशी उकडी रावपाची. आमकां न्याय मेळूंक जाय न्ही हेचे खातीर. आमकां हें मेळोंक जाय न्ही. म्हाज्या भावाक इतलो हें जाला जाल्यार कितें करपाचें आमी. कोणा कडेन आमी वचपाचें आमच्या भावाक फाल्यां कितें जालें. कितले जाणांनी मारलो? ते 2 जाण सख्खे भाव आनी दुसरी कोण येयली की आमी तांकां वळखना. दुसऱ्याकूय तेंच्यांनी फोन करून आपूण हाका मारला. आई सांगता 10-12 जाणां आसलीं मारपाक येवन. दांडो घेवन येवन ताका बसल्या जाग्यार मारला तेंच्यांनी. दांडो घेवन मारला? दांडो घेवन तेच्या तकलेन मारला. हे कितल्यांक जालें? आतां एक वर अर्दे वर. आतां पुलीस स्टेशनार आमी 10-15 मिनटां आसली. तेच्या उपरांत हांगा येयलो. 1 वर जायत येयलो. पूण भुरग्या खातीर म्हणजे एक्झॅक्ट कितें? आतां तेंकाच खबर. ती कितें म्हणटा तुमी आमकां काय म्हणपाचें ना की त्या भुरग्यांनी हांकां मारले. ह्या भुरग्यांनी ताका म्हणजे आतां भुरगीं खेळटा झगडटात न्ही. हेंच्यांनी म्हाज्या भावाच्या भुरग्यांनी ताका काय करूंक जाय. तेणी कितेंय केलें जाता. आईन कितें म्हटलें म्हाज्या तूं कितें उलयता. भुरग्याक आमी व्हडलीं जर उलयलीं जाल्यार कितें जातलें. भुरगीं खेळटा एक जातलीं.